Hello learner, in this video we are going to see the capitalization of average profit method. Now capitalization of average profit method, what do we mean by capitalization? Right? The meaning of capitalization is the profit that is earned by the business, उसको हमें करना पड़ता है कैपिटलाइज कि वो प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. सो यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, यू विल गेट द कैपिटलाइज प्रॉफिट. नाउ वो जो कैपिटलाइज प्रॉफिट आया वो रिप्रेजेंट करता है कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है टू हैव सच काइंड ऑफ सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट. और उससे आप उसके कम कैपिटल में अगर आप बिजनेस कर रहे हो then it is called value of goodwill. Now how to calculate? Let us see step by step. First of all, we need to find out capital employed, that is total assets minus total liability. Then find out simple average profit. अगर आपको बोला है weighted average profit से calculate करो, then only weighted average profit will be used. Otherwise simple average total profit divided by total number of years. Then find out capitalized profit. Now what do you mean by capitalized profit? As I said, एवरेज प्रॉफिट जो मिला है उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइड करना है, राइट. सो यू विल गेट द कैपिटलाइज प्रॉफिट. एंड स्टेप नंबर 4, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ कैपिटलाइज प्रॉफिट जो होगा उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. वाई? what this capitalized profit minus capital employed represents? कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ है एवरेज प्रॉफिट, उसको अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे तो उतनी कैपिटल में आप बिजनेस कर रहे हो, उतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है टू अर्न दैट प्रॉफिट. उसमें से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, राइट. अगर वो कम है, कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल बिजनेस का ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज उतनी कम कैपिटल में यू आर एबल टू अर्न द गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. नाउ लेट अस क्लियर द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट थ्रू वन एग्जांपल. अ बिजनेस हैज अर्न्ड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years and the normal rate of return is similar in the similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit, given that the value of net assets of the business is 8,20,000. The net assets that is called capital employed is directly given 8,20,000 and the average profit is directly given, that is 1 lakh. Now we are supposed to find out capitalized average profit. So average profit directly given 1 lakh multiplied by 100 divided by normal rate of return is given 10%. So 1 lakh multiplied by 100 divided by 10%, it comes to 10 lakh rupees. And how much you are to earn the amount of 1 lakh, you are required the amount of capital invested 10 lakh rupees, but you are earning the profit of rupees, average profit of rupees 1 lakh by investing only and only 8,20,000. So whatever difference of capital is there, that is 10 lakh minus 8,20,000, that is 1,80,000 is the value of goodwill of the business. So this is the capitalization of average profit method by which the firm's goodwill will be calculated. Thank you.